Hello students, welcome in my channel. Students, in today's lecture we are going to proceed with the topic, that is the electronic effect. So in the yesterday's lecture we are started about the inductive effect, and almost maximum points we are covered about the inductive effect, but few more points I want to discuss with you, so that in this lecture also we are going to proceed our topic, that is the inductive effect. So in the yesterday's lecture we are discussed what is the inductive effect, what are the important points in the inductive effect. Just I will be highlights you. So we are discussed about inductive effect, that it takes place in the sigma bonding, correct? So there is the shifting of electrons. Then we are discuss about this effect is totally depends on the electronegativity concept. Then we are discuss about there is the two types of inductive effect, plus I inductive effect and minus I inductive effect. How we have to identify the plus I effect and minus I effect, obviously on the basis of their electronegativity concept in the systems and the groups which is attached to the system. So students, after discussing all these things, now you come to know that the system and the group is playing an important role in the inductive effect. So let us discuss briefly about this, so that you come to know that whatever be your doubts will be there about the inductive effect, it will be clear. Let us see. Now see the students, I am going to draw some example here. Let us see this example. This is example number 1. Obviously carbon is attached in this way, tetravalent. Now if you are going to see this example carefully, this is the carbon system, correct? So this is the carbon system, correct? We can see that this is the system. And what is this, student? This is the group. This is the group which is attached on this carbon system, which is attached to the carbon system. Now student, interesting thing is that this X is any halogen if you are going to take. So the group having the more electronegativity than the system, correct? Because this group is attached to this carbon, and that's why the electronegativity of this group is higher as compared to carbon. So what type of effect is possible here? So that discussions we are going to discuss now. Okay, now as it is more electronegative, so electrons are going to shift toward the X, understand? So this is more electronegative, keep in your mind, as it is more electronegative, okay, as compared to carbon. So electrons are going to shift that side, so ultimately minus delta charge is going to form. Then on the first carbon there is the plus delta is going to form, because electrons are shifting towards the X. Similarly on second carbon there is double plus delta, means as compared to carbon 1 there is the less electrons. Then similarly it will be triple delta will be going to form here. So in this way, and after third carbon the inductive effect is going to nullify, as I told you. But now which type of effect is there? So there are two types of effects we have discussed, plus I and minus I effect. So in this case, as group is taking or shifting the electrons towards itself because of the electronegative, here in this example you can see minus I inductive effect. Here you can see minus I effect. Okay, so this is very important, student, now to understand this concept. So this is one example. So here group attracting the electrons towards itself, that's why this is the electron withdrawing groups, and that's why here minus I effect. Minus I effect means what? Electron withdrawing effect. Now let us see another example, another same examples I am going to draw here with the 4 carbons only. And here now students, I am going to attach with the metal, any metal. Okay, now interesting thing is there. So we can see here Y group better. So Y is the metal, let us consider it is now metal. Okay, so now this is the system again, correct? This is the system, and Y is the group. Now this is the group, understand?
But now very interesting thing is there. As I told you, this attached with the metal. So metal having the less electronegative than the carbon, or we can say that carbon is more electronegative than metal. So what happens here? Here the electrons are going to take towards the carbon, as carbon is more electronegative. Means what? Metal donates the electrons towards the carbon, correct? So here in the system you can see, as it attracts the electrons or shift the electrons towards itself, it becomes minus delta, understand, and this become plus delta, understand. Very interesting. Now as it becomes minus delta, so remaining is the again minus only, but as compared to the first carbon, they are become less minus charge, understand. So this effect is going to shift in this way. So which type of effect is there? So ultimately here plus I effect, plus I effect. Why plus I? Because now group is donating the electrons, group is donating the electrons towards the system. This concept you have to keep in your mind. Okay, so in this case group is taking the electrons towards itself, but in this case group is giving the electrons or shifting the electrons towards the system. That's why here plus I effect. So whatever be the yesterday's we are discussed, there are two types of the effect, inductive effect, minus and plus I effect. In this way you are going to understand the effect. Second point, now definitely the questions is there in front of you. Sir, how we are going to identify in the examples which effect is there? In this way you have to identify. Okay, as per the attachment of the group in your system, you can easily understand which type of effect. And very simple clue I am going to give you, that whenever in your system attach with the alkyl group, or we can say that the group is alkyl, at that times you have to keep your mind, generally the alkyl groups showing the plus I inductive effect. Alkyl groups, keep in your mind. So if the alkyl groups are there, then they are showing the plus I inductive effect. And whatever be the different functional groups, what are the different functional group? You know that alcohol, ketone, aldehyde, acid, ester or cyanide, these are the functional group. If this type of functional group is there, then definitely there is the minus I inductive effect. So keep in mind these tricks. If there is the functional groups is there, functional groups attach, functional group, then there is the minus I effect, and if there is alkyl group is there, there is a plus I inductive effect. This is very very important, keep in your mind. Now I hope whatever be the discussions about the inductive effect, now it is clear for you. And now the question is there, what is the different applications of this inductive effect? Definitely the questions will be there. So the different applications of these inductive effects are, number one, it helps to stabilize or to identify the stability of carbocation. It helps to identify the stability of the carbanion. It helps to identify the acidity of acid. Okay, then it helps to understand the basicity of amines. So such a type of different applications is there about the inductive effect. Okay, so these applications actually we have to see in the details, but as our point is going on, now the inductive effects related to the applications we are going to make in a separate video regarding that, what are the different applications and their importance regarding the inductive effect. So student, दिस इज ऑल अबाउट द इंडक्टिव इफेक्ट. तो आज देखिए बच्चों, आज के लेक्चर में हमने इंडक्टिव इफेक्ट ही कंटिन्यू किया है. कल तक का पार्ट्स ज़्यादा वीडियो बड़ा हो रहा था, इसकी वजह से हमने उधर फिनिश कर दिया है, और वही टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज जो इंडक्टिव इफेक्ट का जो भी पार्ट बचा था वो मैंने आज चालू किया है. तो इसमें आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि जो भी हमने कल दो इम्पॉर्टेंट इफेक्ट देखे थे, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट, उससे रिलेटेड एक कंटिन्यू किया है. तो इधर एग्जांपल्स मैंने आपको दे दिया है. आपको दिख रहा है कि इधर एक फर्स्ट एग्जांपल्स में कार्बन का चेन दिख रहा है और एक एक्स ग्रुप दिख रहा है. तो मैंने इसका सीधा सीधा डिवाइडेशन किया है, एक सिस्टम बना दिया है और एक ग्रुप बना दिया है. जब आपका ग्रुप मोर इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप होगा, जब आपका ग्रुप ए ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स खींचने वाला होगा,
तो उधर हमेशा माइनस आई इफेक्ट बताता है, याद रखिए ये ट्रिक्स। तो इधर अभी जब एक्स इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा तो अल्टीमेटली उस पर माइनस डेल्टा चार्ज आएगा और कार्बन पे प्लस डेल्टा आएगा, और उससे जो भी अटैचमेंट कार्बन है तो उसमें भी प्लस डेल्टा चार्ज आता रहेगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स उधर भी कम कम होते जाएंगे। तो इधर एक चीज़ आपको क्लियर हो रही है कि इधर भी पोलराइजेशंस भी डेवलप हो रहा है एडजेसेंट बॉन्ड में, अंडरस्टैंड। तो एक बॉन्ड की वजह से दूसरे बॉन्ड में पोलराइजेशंस भी इंड्यूस होता है, ये भी याद रखना है आपको। इंडक्टिव इफेक्ट में पोलराइजेशंस इंड्यूस होता है, और एक परमानेंट टाइप का इफेक्ट भी होता है, परमानेंट। ओके, सो परमानेंट टाइप का इफेक्ट इसमें हम बता सकते हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखना है आपको। ऐसे ही मैंने नेक्स्ट एग्जांपल्स में आपको बता दिया, इधर सिस्टम लिया है लेकिन इधर जो ग्रुप अटैच किया है वाई, ये कोई मेटल या हाइड्रोजन ग्रुप है। तो इससे में एक चीज़ आपको याद रखना है कि कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये मेटल या हाइड्रोजन से ज़्यादा होने की वजह से इसमें जो ग्रुप अटैच है मेटल या हाइड्रोजन, वो इलेक्ट्रॉन्स देगा, कार्बन खींचेगा, और कार्बन जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये सिस्टम नेगेटिव, यानी इलेक्ट्रॉन्स उसके तरफ ज़्यादा आने के वाले हैं, तो अल्टीमेटली वो नेगेटिव बनेगा और ये जो है ये प्लस डेल्टा बन जाएगा उधर। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है, और ये अगर आपकी क्लियर हो रही है तो आपको इंडक्टिव इफेक्ट बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। और एक ट्रिक्स मैंने आपको दे दी है कि कुछ बच्चों का कन्फ्यूजन ऐसे भी होगा, तो ये पहचानना कैसे डिफरेंट एग्जाम्पल्स में। तो उसके लिए एक ट्रिक्स ऐसी है कि अगर आपको प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट पहचानना है तो उसके लिए सीधा सा ट्रिक्स है। वो क्या है, देखिए, अगर आपका सिस्टम्स अटैच है ग्रुप्स को, और वो ग्रुप्स अगर फंक्शनल ग्रुप्स है कोई भी, अभी फंक्शनल ग्रुप्स का आपको थोड़ा सा नॉलेज तो होगा, फंक्शनल ग्रुप कौन से होते हैं, जैसे कि अल्कोहल, एल्डिहाइड्स, कीटोन, साइनाइड, एसिड, ईस्टर, ऐसे जो ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप। तो वो फंक्शनल ग्रुप्स जो अटैच होते हैं, तो फंक्शनल ग्रुप्स जब अटैच हो गए उस सिस्टम में तो माइनस आई इफेक्ट दिखाने वाला है, माइनस आई, याद रखिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, ठीक है। और जब आपके सिस्टम में कोई भी अल्काइल ग्रुप अटैच होगा, अल्काइल ग्रुप यानी मिथाइल, उसके बाद में इथाइल, प्रोपाइल, ऐसे जो ग्रुप अटैच हो गए तो समझ लेना कि उधर प्लस आई इफेक्ट दिखाने वाला है। आ रहा है समझ में? ये ट्रिक्स याद रखना है। अगर ये ट्रिक्स आपकी याद रख गई तो आपको इंडक्टिव इफेक्ट बहुत आसानी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और फिर बाद में मैंने लास्टली उसके बताया कुछ एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, जैसे कि इसका यूज़ होता है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस के लिए, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम्स आइडेंटिफाई करने के लिए, स्टेबिलिटी ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिड की हमें पता चलने के लिए, या फिर बेसिसिटी ऑफ अमाइंस का भी पता चलने के लिए। ऐसे कुछ एप्लीकेशंस उसके हैं, उसका भी सेपरेट वीडियो हम बनाने वाले हैं, क्योंकि अभी जो वीडियो हमारे चल रहे हैं तो अभी इसमें वो पार्ट ऐड हो रहा है, तो इसकी वजह से उसका सेपरेट एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट हम बनाने वाले हैं। आ रहा है समझ में? तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंडक्टिव इफेक्ट। अभी मुझे लग रहा है कि आपका इंडक्टिव इफेक्ट क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, और आगे आने वाली वीडियो आप देखते रहिए। तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं आपका सेकंड इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, जिसका नाम है, क्या नाम है आपको खुद को बताना पड़ेगा। अभी या नहीं मालूम तो मेरा आगे का वीडियो आपको देखना पड़ेगा, क्या है उसका नाम और क्या होता है वो इफेक्ट। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।